वेलकम टू चेस प्रोस अकेडमी लाइव। मैं हूं कोच रोहित। आई एम अ फेडरेटेड प्लेयर प्लस आई हैव अ 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन चेस कोचिंग। सो यहाँ हम सीखेंगे कि पावरफुल कॉन्सेप्ट टैक्टिक्स जो आपके रेटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। So let's dive into our today's session. So this is a two move checkmate. First we will always start with a warm up. So this is a two move checkmate. तो आप मुझे बताओ कैसे आप दो मूव चेकमेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वाइट टू प्ले एंड फाइंड द चेकमेट इन टू मूव। जो आज का टॉपिक होने वाला है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमारे पास पॉन मेजोरिटी होती है, सो हाउ वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड हाउ वी विल विन दैट, हाउ टू प्ले विद दैट पॉन। ओके, टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्ले विद द माइनॉरिटी पॉन्स, जहां पर हमारे पास माइनॉरिटी ऑफ पॉन स्ट्रक्चर होते हैं। Was out of town, could not attend night shift. It's okay, Prabhas, no problem. Like we are, it's okay, nice. So out of town for what reason? ओके, बट हाँ, अभी ये सारी बातें हम अपने इवनिंग स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, जो कि मे बी मोस्टली आई विल कम ऑन सैटरडे संडे ओनली। अभी डिसाइड कर रहा हूँ। हाय साइलेंट ब्लंडर, हेलो, हाउ आर यू चैंपियन? ओके गाइस, लेट्स फोकस, फाइंड अ टू मूव चेकमेट। Find a two move checkmate. Let's go. Oh, wow. That's nice. That's great. So great. Amazing. तिरुपति घूम के आना. It's really amazing thing. Hi, Gear. How are you? Okay, guys, focus. मैं दो चार मिनट पहले इसलिए नहीं आया हूँ that we will talk. We will discuss, we will enjoy in our evening streams where we will come to play, review and learn. अभी यहाँ पर आपको दो मूव में चेकमेट करना है। This is a study puzzle. This study is made in 1964 by A Green. A Green ने बनाया था इसको। ओके, द ऑब्वियसली दो मूव चेकमेट का हमारा ऑप्शन यही है कि हम इसमें ब्लैक के सारे ऑप्शंस को पहले देखेंगे कि हाउ मेनी ऑप्शंस आवर लाइक हमारे ओपोनेंट के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। उसके बेस पे हम अपना एक बढ़िया सा मूव सेलेक्ट करेंगे जो कि हर तरीके से चेकमेट कर सकता है। गियर रुक H4, लेकिन गिविंग चेक वुड बी लाइक इज इट हेल्पफुल टू गिव यू लाइक टू डू चेकमेट इन टू मूव्स? क्वीन C3, आर यू श्योर क्वीन C3 से आप दो मूव में चेकमेट कर लोगे लॉर्ड? बिकॉज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज क्वीन C3 बिशप G2, फिर आप चेकमेट कैसे करोगे? अगर आप इधर आते हो तो किंग ऊपर चला जाएगा, अगर आप इधर आते हो या इधर आते हो तो बिशप ने ब्लॉक कर देना और दो मूव ओवर हो जाएंगे, राइट? वाओ, गेयर अमेजिंग। लेकिन व्हाट इफ टेल मी सम ऑप्शंस। क्वीन F6, सेम थिंग, क्वीन F6 सेम, बिशप G2, क्वीन B2, check your opponents all the option. Queen B2 is amazing move, लेकिन क्वीन B2 पे आप मेट कैसे कर रहे हो? मैं मतलब अगर कुछ ना चलूं, सिर्फ बिशप C6 कर दूं तो, राइट? नहीं 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 नहीं, बिशप C6 करने पे नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा, बिशप E4 कर दूं और या E4, बिशप E4 कर दूं तो बिशप E4 पे रुक रहा है, क्योंकि जब पॉन प्रमोशन आएगा तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा पॉन प्रमोशन को। यस, शिव गिरद्रा। ओके, queen B2, it's not working. Guys, think more. Think more. One last minute for this one. One last minute. तो आज हम सीखने वाले माइनॉरिटी पॉन अटैक्स। ओके, कैसे जब हमारे पास एक साइड में माइनॉरिटी पॉन होते हैं, कम पॉन होते हैं, तो कैसे सीखना है। दिस इज आवर, यस, आई थिंक क्वीन A8 इज बेस्ट। यस गेयर, क्वीन A8 इज एग्जैक्टली बेस्ट। यू फाउंड द राइट मूव, लेकिन आई वॉन्ट यू द वेरिएशन कि ठीक है क्वीन A8 चल रहे हो, टेल मी व्हाट ब्लैक कैन डू। क्या होगा अगर ब्लैक विल कैप्चर योर क्वीन? क्या होगा ब्लैक इफ ब्लैक विल मूव हिज बिशप बैक? इन सारे ऑप्शंस में आप क्या करोगे, राइट? सो इफ यू राइट डाउन द होल मूव दैट वुड बी बेस्ट, देन पॉन प्रमोशन टू रुक कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, ओह यस, यस।
So the right answer is for this puzzle is queen a8. Now we are threatening to do checkmate from h8. और अगर ये यहां पर आके ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज दिस बिशप इज पिन. तो कैप्चर किया तो a8 क्वीन नहीं कैप्चर करते हैं, राइट? जैसे बिशप g2 आ गए तो ऑब्वियसली वी विल जस्ट कैप्चर द g2 एंड दैट्स अ चेकमेट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर व्हाइट. मुझे लग रहा है आज लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. इट वॉज अ वेरी सिंपल. ओके, चलो अब हम चलेंगे अपने माइनॉरिटी अटैक में सीखने. तो जैसा कि हम पॉन स्ट्रक्चर देख सकते हैं इन दिस पोजिशन, दिस इज अ पॉन स्ट्रक्चर ऑफ माइनॉरिटी पॉन अटैक. अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सी दिस साइड ब्लैक हैज 4 पॉन, राइट? एंड यू हैव ओनली 3 pawn. It means on a queen side, white has minor pawn structure, right? हमने लास्ट क्लास में क्या मेजॉरिटी pawn पे सीखा था कैसे खेलने, but this time we will see how to play with like minority pawn. Okay? पिछले में हमने सीखा था मेजॉरिटी pawn के साथ खेलते हैं. अब इसमें ये बहुत डेंजरस होता है, राइट? क्योंकि यहां पर ब्लैक हैज अ चांस टू, इफ ही विल गेट अ चांस टू पुश दिस pawns, he will get a passed pawn, राइट? यहां पर हमें हमारा जो आइडिया होगा वो ये होगा कि हम अपने पॉन को पुश करके या तो A7, सॉरी आई जस्ट प्लेड द मूव, या तो A7, B7 या C6 और D5 को आइसोलेटेड पॉन बना देंगे या बैकवर्ड पॉन में चेंज कर देंगे. अब वो होगा कैसे, लेट्स सी. पहले तो ऑब्वियसली वी नीड आवर किंग. ठीक है, अपना अपना गोल यही है कि हमें इसके पॉन स्ट्रक्चर को बिगाड़ना है. ठीक है, वी वांट टू लाइक ब्रेक हिज पॉन स्ट्रक्चर. ही हैज अ वेरी गुड पॉन स्ट्रक्चर G8. अब इसके पॉन स्ट्रक्चर को बिगाड़ने के लिए क्या करना होगा, राइट डाउन योर मूव, कि अगर हम ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर को बिगाड़ना चाहते हैं, वी वांट टू रूल हिज पॉन स्ट्रक्चर, व्हाट वी नीड टू प्ले. इट्स ओके प्रभास, नो डोंट वरी. अगर हमें ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर को रूल करना है, बिगाड़ना है, वीकनेस क्रिएट करनी है, तो हमें क्या करना होगा. A4 इज अ गुड मूव. ओके, लेकिन A4 पे ऐसा नहीं है कि B5 आ जाएगा और यू विल लाइक जस्ट गॉट स्टक. वैसे वो भी अच्छा ही है, A4 इज गुड, लेकिन ऑब्वियसली हम A4 जा सकते हैं. E4 नहीं, E4 नहीं करना, हमें इस साइड में वीकनेस क्रिएट करनी है. ठीक है गेयर, तो लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट. सो A3, okay, the idea is to play B4. Okay, B4, A into B4, A into B4, and now when the kings moves, we will just play B5. Okay, अभी मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये आप एंड गेम में करो, क्योंकि सी नाउ दिस ऑल पॉन्स बिकम आइसोलेटेड, राइट? हमने सैक्रिफाइस कर दिया. ओके, कर सकते हैं B4 टू प्रिवेंट A5, लेकिन साथ साथ वी नीड टू क्रिएट दिस आइसोलेटेड पॉन स्ट्रक्चर, राइट? तो दैट विल हेल्प यू. अभी हम कुछ गेम्स देखेंगे प्रभास, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ इफ यू विल सी दिस पॉन्स आर आइसोलेटेड, ओके, और इट्स अ वीक पॉन जहां पर आप अटैक कर सकते हो. आई विल नॉट सजेस्ट टू डू दिस इन अ एंड गेम, लेकिन ये मैं सिर्फ हम ये पॉन स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने ये आपको दिखाया है कि सी दिस पॉन स्ट्रक्चर जहां पे आपके पास माइनॉरिटी पॉन है, माइनॉरिटी ऑफ पॉन है, कम पॉन है, वहां पर आपको क्रिएट करना है वीकनेस. बाय मूविंग योर पॉन फॉरवर्ड आपको आइसोलेटेड पॉन्स बनाने हैं. ठीक है, आप अगर आइसोलेटेड पॉन बना दोगे एंड देन इफ यू हैव अ रुक नाइट बिशप ऑन द बोर्ड, दोस माइनर पीसेस और मेजर पीसेस विल हेल्प यू टू अटैक दिस पॉन. क्लियर? अभी आपको माइनॉरिटी पॉन क्लियर हुआ कि माइनॉरिटी पॉन अटैक क्या होता है और कैसे वीकनेस क्रिएट करते हैं. अगर क्लियर हुआ है तो राइट डाउन यस इन योर चैट. अगर आपको ये क्लियर हुआ है कि माइनॉरिटी पॉन क्या होता है तो यस लिखो चैट बॉक्स में. मैं अभी अब दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ओपनिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं और हाउ वी विल विन द गेम, राइट? कौन कौन सी ओपनिंग में ये आ सकता है. ठीक है, write down yes, very good Prabhas. If you understand, guys, if you understand what is minority pawn and how to create weakness, write down yes in chat quick, क्योंकि I am here for just 30 minutes, तो जल्दी से मैं आपको ये लेसन सिखाऊंगा. दिस इज एडवांस लेवल ऑफ पोजिशनल प्ले. कैसे आप ये पोजिशनल गेम खेल सकते हो.
इन योर चेस गेम. ओके. हे, बस प्रभास को क्लियर हुआ. हाय नितिन. हेलो. ओके चलो, मैं दिखाता हूं कौन कौन से ओपनिंग में ये माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर आ सकता है. ठीक है. सो सबसे पहले आएगा क्वींस गैम्बिट में. ओके. क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. हाय विघ्नेश. सो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन स्टार्ट होता है. राइट डाउन क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के कुछ मूव्स बताओ मुझे. राइट डाउन व्हाट इज क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. चैंपियंस, राइट डाउन व्हाट इज क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. राइट डाउन सम मूव्स ऑफ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन क्विक. क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के कुछ मूव्स मुझे बताओ क्या है. क्विक क्विक क्विक. क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के मूव्स. आपको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ओपनिंग मालूम है. D4, D5, C4, E6, dark wave, amazing. Yes. So D4, D5, C4, gambiting the queen side pawn. So that's why we call it queen's gambit. E6, like the black is not accepting that gambit. So this is called queen's gambit decline. It's a very common opening. बहुत सारे गेम्स में आपको ये देखने को मिलेगा और इट्स अ वेरी स्ट्रांग एज वेल. D4, D5, C4, E6, नाइट C3 जा सकते हो. या नाइट C3 एंड F6, राइट. और यहाँ पे नाइट F3, नाइट F6 और नाइट C3. तो ये आ गया. ठीक है. सेम वेरिएशन. एंड नाइट BD7. सो दिस इज द क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन लाइन. ओके. अब यहां पर भी हमको माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर मिल सकता है. लेट्स सी कैसे. C इंटू D5, E इंटू D5. और अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक का E पॉन था वो D फाइल पे आ गया और व्हाइट का C पॉन. अब वहां पे कोई पॉन नहीं है. Black does not have pawn on the C file. White does not have a pawn on. Sorry, black does not have a pawn on E file and white does not have a pawn on C file. Now अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहां पर सेम माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर है. राइट. यहां पर हमारे पास 2 पॉन है और ब्लैक के पास 3 पॉन है. लाइक अगर हम 3 वर्सेस 4 कर सकते हैं. राइट. So it's a 3 versus 4. We have a minority pawn structure in this position, right? So Queen's Gambit में भी आता है. यहाँ पे सिंपली अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो बिशप G5, C6 उसको प्रोटेक्ट कर लिया और E3 करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं. So this is a Queen's Gambit लाइन जिसमें हमको ये पॉन स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ही मिलेगा. ये आपको बहुत सारे ओपनिंग्स में मिल सकता है. वन मोर ओपनिंग आई विल शो यू दैट कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन. तो आपको पता है कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन क्या है. डू यू गाइस नो व्हाट इज कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन. डू यू गाइस नो दैट कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन. क्विक टेल मी. कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन के ओपनिंग मालूम है आपको. राइट डाउन यस और नो और राइट डाउन द मूव्स. राइट डाउन द मूव्स ऑफ कैरोकैन एक्सचेंज वेरिएशन. क्विक. नो. चलो मैं बता देता हूं. ओके. E4, C6, D4, D5, E into D5, C into D5. Perfect. Yes, very good Prabhas, very good Dark Wave, amazing, you guys are amazing. Okay, so this obviously Caro can start with E4, C6. जब हम C फाइल पॉन को वन स्टेप मूव करते हैं फॉरवर्ड, दिस इज द कैरो कैट डिफेंस. यहाँ पे व्हाइट विल गो विद द सेंटर, व्हाइट विल टेक द सेंटर एंड नाउ ब्लैक विल गो एंड ट्राई टू ब्रेक द सेंटर. ओके. यहाँ पर इफ द व्हाइट विल टेक दिस, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज वेरिएशन. ओके. कैरो कैन डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन. नाउ सिंपल इन दिस पोजीशन ऑल्सो अगर आपको दिखेगा इसमें ब्लैक के पास माइनॉरिटी पॉन है. ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर में आपको क्वीन साइड में सिर्फ 3 पॉन दिख रहे हैं. व्हाइट के पास क्वीन साइड में 4 पॉन है. इफ दे विल कंटिन्यू, व्हाइट विल प्ले C3, नाइट C6, बिशप F4, ओके, नाइट F6 and then E6 is also going there. Okay, bishop D3, bishop G4, queen moves and queen D7 defending this pawn. Okay, and then knight D2 developing and E6. So it's all about development. Okay, कि पूरे पीस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सारे पीस डेवलप हो गए. दिस इज अ कैरो कैन डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन. यहाँ पर आपको माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा फॉर अ ब्लैक साइड.
द आइडिया इज सेम जैसा कि मैंने पहले बताया है। यहां पर हम माइनॉरिटी पॉन को पुश करेंगे टू आइसोलेट द ओपोनेंट बी5 डी5 पॉन्स। ओके, हम इन दो पॉन को आइसोलेट करना चाहते हैं by moving forward this pawns, and that's how you will attack on your opponent. Okay, clear? तो चलो अब नाउ लेट्स सी हाउ वी विल वॉच वन एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो ओपनिंग में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अब बहुत सारे ओपनिंग में ये स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। ओके, नाउ लेट्स गो विद द सम एग्जांपल। अब यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज अ माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर। यार व्हाइट के पास दो पॉन है, ब्लैक के पास यहां पर चार पॉन है, राइट? तो गिव मी सम आइडिया व्हाट यू विल प्ले फ्रॉम व्हाइट साइड इन दिस पोजीशन। यार वी विल कम इन इवनिंग टू प्ले फैंटम। ओके, तो जब हम शाम को खेलने के लिए आएंगे, देन यू कैन आस्क मी टू प्ले, आई विल प्ले विथ यू। राइट नाउ वी आर हियर टू लर्न सम न्यू स्ट्रैटेजी टू प्ले। परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा आइडिया क्या है, हमको इन दोनों पॉन को फॉरवर्ड मूव करना है। ओके, टू ब्रेक पॉन स्ट्रक्चर टू क्रिएट वीकनेस। डार्क वेब A4 इज ऑल्सो गुड मूव, बट हमें B4 को सपोर्ट देना है, राइट? अगर हम A4 जाएंगे तो ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट मूविंग दिस पॉन फॉरवर्ड एंड क्रिएट फास्ट पॉन वेरी इजिली। ओके, तो A3 is the best. Okay, now A3 is defending B4 and also planning for moving B4. Now black played rook E7, which is a very passive move. Okay, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है ये move. It's just protecting F7, B7 and planning to connect the rook from E8. Okay, now tell me what will you play in this position? अब यहां पर आप क्या खेलोगे? ओम मंडोकर, माई फीडे इलो इज 1700। मैंने देखा तो मैंने बताया अभी नहीं खेलते हैं गेम, गेम खेलने के लिए हम इवनिंग में आते हैं। राइट डाउन हाउ यू विल प्ले। परफेक्ट, वेरी गुड प्रभास। हमें B4 पॉन को जब पुश करे तो हमको उसको सपोर्ट देना है। अच्छा, सैक द बिशप। ओके, वेरी गुड। यस, पॉन B4। अभी पॉन B4 गियर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम B4 मूव करेंगे द पॉन विल कैप्चर। आप इसको कैप्चर करोगे, दे विल एक्सचेंज द रुक एंड दे विल गेट दिस पॉन, राइट? तो अभी हमें B4 को और सपोर्ट देना है, एज प्रभास रोड द आंसर। अमेजिंग मूव। पहले B4 को हम सपोर्ट देंगे बाय मूविंग our rook to B1. Again, black played a very passive move, which is not doing anything on this side. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी विल टेक एडवांटेज ऑफ पॉन में माइनॉरिटी पॉन हो तो हम कैसे अटैक कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉर दैट। ओके, नाउ अगेन ब्लैक मूव दिस वेरी इमीडिएट थ्रेट। अब बताओ कैसे आप कंटिन्यू करोगे अपने माइनॉरिटी अटैक को। राइट डाउन योर आंसर क्विक, हाउ यू विल कंटिन्यू योर माइनॉरिटी अटैक क्विक। तो हम एक गेम भी देखेंगे जिसमें आई विल शो यू मिखाइल ताल गेम वर्सेस सेवन आफ्टर दिस, हाउ दे प्लेड। Perfect. Now we will just continue with B4, Prabhas. Amazing. Great. So जिन लोगों को B4 लगता है, that move is amazing. हम B4 के साथ जा सकते हैं, ठीक है? We will go with the B4 to break, right? To break the pawn structure of our opponent. So let's go. He will capture, obviously, right? And now what will you do here? E4 is not coming. B4 तो कैप्चर हो जाएगा ना। B4 पे B5, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा नहीं है कि कैप्चर कर सकते हो A5 एंड देन पुश पॉन एंड क्रिएट वीकनेस डार्क वेब, मतलब ऐसा नहीं है। दिस इज अ बैड मूव। B4 पे B5 आ गया, हम कैप्चर कर लेंगे। मान लो इधर भी कैप्चर होता है, ओके, तो हम वी कैन गिव अ सपोर्ट अगेन, वी विल कम विद दिस। हम अभी बोथ द सेम थिंग विल हैपन। हम A4 करके फिर से वही पॉन स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस विल हैपन सेम। ओके, नाउ नहीं, हम रुक से कैप्चर नहीं करेंगे, राइट? A into B4, परफेक्ट रेड के साथ पॉन एक्सचेंज। यस, नहीं, रुक टू B4 नहीं, वी वांट टू ब्रेक द पॉन, राइट? तो हम पॉन से कैप्चर करेंगे बिकॉज आवर आइडिया इज टू प्ले द पॉन हियर एंड ब्रेक हिज पॉन स्ट्रक्चर। रिमेंबर,
क्या हमने बताया था कि पॉन स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, वी नीड टू क्रिएट आइसोलेटेड पॉन हियर। जब आइसोलेटेड पॉन हम क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वी वॉन्ट टू पुश आवर पॉन टू क्रिएट आइसोलेटेड पॉन फैंटम। ओके, एंड नाउ ब्लैक इज ट्राइंग टू स्टॉप यू टू पुश द बी पॉन। अब क्या करोगे आप यहाँ पे? टेल मी, टेल मी व्हाट विल यू डू हियर? व्हाट विल यू प्ले इन दिस पोजीशन? क्विक गाइस, आप कैसे अपने माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर का यूज करोगे? ऑब्वियसली हम सिंपली पॉन पुश कर सकते हैं, रियली? और कुछ नहीं आइडिया? यस, पॉन पुश कर सकते हैं और दिस इज ऑल्सो कमिंग, बट यस ऑब्वियसली पॉन पुश के साथ जाएंगे एंड देर आर सो मेनी सपोर्ट्स फॉर अ दैट पॉन। डार्क वेब अभी देखते हैं, उसको मैं बताता हूँ। लेट्स सी, हम यहाँ गए थे, we captured. If we will play this, it's not showing in this example. It's, we will discuss that in a tal game, okay? Dark web, but if the b5 will come. Okay, so here we go, and this push b5. So we have a many support there, and we are also stopping this pawn to move forward. तो black अपने c6 pawn को भी c5 पे नहीं मूव कर सकता, ठीक है? और we already have many supports on this file. चलो, now our idea is to get here the knight to a4 to c5, or he's trying to just capture our knight. So what will you play in this position? अब ब्लैक क्या कर रहा है? ब्लैक इज जस्ट इग्नोरिंग दैट माइनॉरिटी अटैक। आप क्या खेलोगे? यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। b5 के बाद यहां पर c5 तो वैसे वीक पॉन स्ट्रक्चर बन गया और नाइट विल प्ले बेटर हियर। नाइट एक्सचेंज करना है तो इट्स अ बैड मूव। टेक द नाइट, बट हाउ? विद द बिशप और विद द नाइट? Now our plan is successful, right? Now we have a chance to create a weak pawn structure. Bishop into e4 is also fine, not bad, but हमारा plan तो successful हो गया ना? We reach there and now we will just capture this to create a backward pawn. अब हमारा plan यही है कि हम knight को a4 पे जाएंगे, c5 पे move करेंगे, which black will try to prevent. Okay? हमें नाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जब मौका मिला है तो we will create a weakness. Okay, obviously he will exchange this, okay, and we will win. But अब बताओ, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? How we will take advantage of this? No need to waste your move to play on the king side. आपको अपने प्लान पे रहना है, ठीक है? टेक विद बिशप, टेक विद बिशप इज नॉट बैड, इट्स गुड मूव, बट हम अब कैप्चर करके भी कुछ नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट गिविंग हिम अ चांस टू एक्टिवेट हिज पीसेस। ओके, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। तो कुछ नहीं होता फैंटम। टू क्रिएट वीकनेस, नाइट a4, नाइट a4 इज अमेजिंग मूव, बट गेयर नाइट के लिए हम n का यूज करते हैं। यहां पर पहले हम नाइट पॉन को पिन करेंगे so that the pawn cannot get a chance to move forward, and we will get our both the rook on the b5. Knight a4 is a good move, lekin let's come with this. Okay, we are stopping this pawn to move forward, and if we will exchange, it's okay, right? We will just capture with the queen and simply now see, the idea is this rook will come to a1 to control a8 square. The bishop will obviously capture the knight, so no one can control c5 square, क्योंकि ये white square bishop c5 dark square को control नहीं कर सकता है। उसके बाद हम अपने knight को maneuver करेंगे from e1 to d3 to c5, and that's how we will get an advantage of having a very good outpost, creating weakness on the opponent c5, क्योंकि c6 बैकवर्ड पॉन हो चुका है तो उसका वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में वी विल क्रिएट सेकंड वीकनेस टू गेट एन एडवांटेज। ओके,
Yes, the rook b6 is for just stopping his piece to move forward. और हमें नाइट को एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी. Till that time when he is coming, wasting his move to exchange our knight, उस टाइम का यूज करके हम अपने लिए और अच्छे प्लान क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. हमेशा अपने ओपोनेंट ने जो आपको मूव करा है उसको रिस्पॉन्स में मूव करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू कैन लुक फॉर योर बेटर आइडियाज. ओके. चलो, नाउ आई विल शो यू वन गेम. This game played between Mikhail Tal versus Vladimir Savon. Okay, okay. मैं चलो अब एक गेम दिखाते हैं जिसमें हम देखेंगे हाउ Mikhail Tal played with this minority pawn, how he created an advantage for his position. Okay, let's go. So this game started with the c4. अभी इस ओपनिंग का नाम पता है आप सभी को? Which opening is this? Yes, Phantom. C4. कौन सी ओपनिंग है? राइट डाउन द नेम ऑफ दिस ओपनिंग. सो व्हाइट इज ताल. मिथाइल ताल इज प्लेइंग विथ व्हाइट एंड व्लादिमीर सेवन इज प्लेइंग विथ ब्लैक. यस तौशिफ, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, रिमेंबर हम माइनॉरिटी पॉन अटैक सीख रहे हैं तो हम उसको देखेंगे कि कैसे खेल सकते हैं. E6, ओके, नाइट C3, D5 और ये ओपनिंग ट्रांसपोज हो गई इंग्लिश टू क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन पे. ठीक है. यस, इट वाज इंग्लिश बट नाउ इट्स ट्रांसपोजेस टू अ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. नाउ C into D, okay, sorry, first knight F6, white will play C into D5, E into D5. अगेन हमको पॉन माइनॉरिटी वाली स्ट्रक्चर मिल गया हमें. वी गॉट दैट स्ट्रक्चर जहां पे पॉन माइनॉरिटी है. व्हाइट हैज ओनली 2 पॉन दिस साइड, क्वीन साइड, एंड ब्लैक हैज 4 पॉन ऑन द क्वीन साइड. राइट. आई कैन सी योर चैट बट मैं अगर मैं आपके चैट का रिप्लाई करूंगा ना तो मैं अपने जो टाइम है उसको मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा. ये जो चैट्स है ना, मैं जो पढ़ता हूँ, मैं ऑब्वियसली आई विल कम इन इवनिंग तब हम पढ़ सकते हैं. Yeah. Okay, now let's go with how they continue this game. Yes. कैसे हम इसमें कैसे ताल ने how ताल continue this game. So he started with bishop g5 pinning the knight, bishop e7, e3 activating the other bishop. Okay, now obviously castling, bishop d3. Okay, this is still the main line, right? ओके गाइस, फोकस ऑन गेम. ओके, अगर आप फोकस करोगे आपको समझ में आएगा. दिस इज नॉट अ वेरी इजी. हम बहुत बार मिस करते हैं एंड ऑल द ग्रेट प्लेयर्स आर यूजिंग दिस इन देयर गेम एंड दैट्स हाउ दे आर विनिंग देयर मोर गेम्स. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू फोकस. ओके, so now it's knight bd7, knight f3 activating all his pieces, rook e8 posting the rook on a semi open file. Okay, castling, and now he played his knight to f8. Okay, to activating his bishop on that diagonal only. Okay, clear. अभी हमें ये माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर मिल गया, सारे पीसेस भी एक्टिवेट हो गए. राइट, क्लियर. अभी इसमें ये बहुत पुराना गेम है. सो वी कैन सी दिस नाइट f8. नए गेम्स में आपको दिखेगा कि मोस्टली प्लेयर्स आर प्लेइंग b6 एंड डेवलपिंग बिशप b7. जब मैं भी खेलता हूं तो आई वांट दिस बिशप टू एक्टिवेट फ्रॉम b7 और यहाँ पे हम पॉन ब्रेक करते हैं टू गेट अ हैंगिंग पॉन स्ट्रक्चर. बट अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हाउ ताल कंटिन्यू दिस गेम. ओके, सो क्वीन c2, हियर ब्लैक प्लेट बिशप e6. हम गेम देख रहे हैं. ठीक है, हम गेम देख रहे हैं एंड वी विल सी हाउ Mikhail Tal will use his pawn minority attack to win the game. Bishop e6. Okay, now middle game comes और middle game में हमारा h3 knight g6, h3 knight g6 हम जा सकते थे लेकिन but it's a game, right? Oh wow, yes, obviously जो हमने अभी फिलहाल में एग्जांपल देखा था उसमें भी it was a similar position, right? लेकिन इट्स अ गेम, वी आर वाचिंग अ गेम, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही. लेट्स सी हाउ दे विल कंटिन्यू.
Okay. So knight here, Mikhail Tal played his knight to e5. Middle game में हमारा strategy यही होता है to move your pieces forward, okay, to attack, to move your pieces in your opponent territory to exchange and get more space for your pieces, more active square for your pieces. So knight 6 moves to d7. Here, the 7, Vladimir 7 is playing very passive game. He played his knight f to d7 to exchange this knight and exchange this bishop with the Mikhail Tal. Okay. Now tell me how Mikhail Tal play with this in this position. What do you think? What Mikhail Tal played in this position? Let's see who will think like a Mikhail Tal. अभी आप लोगों को मैंने कई बार बताया ना, डोंट एक्सचेंज योर पेयर ऑफ बिशप इन द ओपनिंग, दोस पेयर ऑफ बिशप्स आर एडवांटेज. ओके, लेट्स सी who will find the good move which Mikhail Tal played. Bishop sack, bishop exchange is not bad. Bishop sack पहले तो नहीं हो रहा है. Perfect, Sirmor. Amazing. Sirmor found the idea. How Mikhail Tal played. Exchanging this bishop, there is nothing bad. But keeping this bishop on board is very important right now. Okay? Because pair of bishop का advantage, आपके bishop ज़्यादा active है. They are very active on the opponent king side. So why we need to exchange our active bishop, active piece with the opponent passive pieces. Okay? Bishop f4. Now 7 exchanged his knight and obviously he captured with the bishop. Knight pawn से भी capture कर सकते थे क्या? Is it good to capture with the pawn also? Tell me, is it good to capture with the pawn? नहीं, obviously it's very bad. क्योंकि यहाँ पर हमने तो फिर ज्यादा pawn majority दे देना है और our bishop will get blocked, obviously. So we will capture with the knight bishop only. No, obviously no. नहीं, pawn से बिल्कुल bad है. वो हम अपने बिशप को ब्लॉक कर रहे हैं. He will not play on that side. Then the black will start playing on the queen side and black will win. Okay? So no. Okay, now here black played c6 to protect this pawn and this pawn minority came in the game. Now let's see. तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है ऑफ प्लेइंग अ दिस pawn minority attack. Looking a1 h8 diagonal. a1 h8 diagonal. अच्छा ये डायगोनल, हाँ ऑब्वियसली, तो यहां से हम देख ही सकते हैं यार. परफेक्ट. ओके, नाउ वी ऑलरेडी फाउंड द आइडिया. अब यहां पर आप मुझे बताओ कैसे खेलोगे. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉन माइनॉरिटी. अब यहां पर आप कैसे खेलोगे? टेल मी गाइस हाउ यू विल प्ले. दिस इज द गेम फैंटम. आपको बस इतना समझना है, दिस माइनॉरिटी पॉन स्ट्रक्चर जहां यू हैव 2 versus 4. ओके, on the queen side, and now how you will play. Obviously we want to play this a3. Yes, perfect, very good. लेकिन अभी before going a3, देखो a3 is not a bad move, it's a good move. Okay, but here Mikhail Tal before playing a3 he played something else. Can you tell me guys what he played? He didn't play a3, he played something else. a3 to do b4 and then b5 to break this, right? अभी b4 डायरेक्टली जा नहीं सकते हम ना, दिसले. लेकिन अभी हम क्या खेल, मिखाइल ताल ने a3 नहीं खेला. he played something else. No rook b1. Very good phantom knight, but on which square? Sir, how about f3? f3 is not good. f3 is creating weakness on this open file. आपको एक बैकवर्ड पॉन मिलेगा, मजा नहीं आएगा. You need to play this side. हम माइनॉरिटी पॉन अटैक सीख रहे हैं, तो माइनॉरिटी पॉन अटैक को हमें सीखना है. यस, वेरी गुड. रिटल्स आर फाउंड. डार्क वेब रुक b1 इज आल्सो अमेजिंग, हेल्पिंग दिस पॉन टू मूव दिस पॉन फॉरवर्ड. बट फर्स्ट Mikhail Tal played knight a4, like provoking his opponent to play b6, so he will get this c5 pawn, like weak square, provoking his opponent to play b5. So he played knight a4. Okay, now black played f6. Okay, attacking the bishop. Yeah, then bishop moves back to g3. Obviously he will save, he will not sack the pieces like this. Okay, Mikhail Tal is very famous for sacrifice, but he is doing calculated sacrifice, right?
Okay. Now he played bishop f7 back, a very passive move, and also opening the rook file. Okay, thinking about to open the rook file. Now tell me what will you play in this position? अब मुझे बताओ आप इस पोजीशन में क्या खेलोगे? लाइक अ मिखाइल था। लास्ट गेम का ही समरी अभी हम लास्ट में जो एग्जांपल देखा है सेम एग्जांपल है। इस गेम को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रुक E1 जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने अटैक नहीं भूलना है। नाइट C5 जा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन B6 से हमारे नाइट को वापस भेज दिया जाएगा, राइट। और उसके बाद C5 वी आर हेल्पिंग हिम टू प्ले B6 एंड नाइट C5, राइट, अपॉन C5। इज इट गुड? तो हम ओपोनेंट को हेल्प करें टू मूव दिस फॉरवर्ड। नाइट C5 is not good because we are helping him to move his pawn forward and rid of like वो weakness चली जाएगी। A3 B4 very good, that's the idea। लेकिन मिखाइल ताल is the मिखाइल ताल, right? He can't go very easily like this कि हम बिना sacrifice के चले जाए। He directly played B4 and going for capture like B5। क्या बिशप इसको कैप्चर कर सकता है? Can the bishop capture this? Is it good for the E4 करके? Why we are going to help our opponent to play on the king side when we know that we are going to play pawn minority attack? हम pawn minority attack सीख रहे हैं, तो pawn minority attack करेंगे, ठीक है। अब यहां पर what will happen if the bishop will capture this? Tell me what will happen if the bishop will capture this? बिशप कैप्चर पॉन इज इनएक्यूरेसी। ओके, अगर वो कैप्चर करता है, ठीक है, तो यहां पर रुक FB1 आएगा एंड दिस बी फाइल इज फॉर ऑब्वियसली फॉर बाइट। बिशप हैज टू मूव बैक, नहीं तो फिर हम कैसे भी करके बैक तो करा ही देंगे अगर A5 भी आया तो। एंड देन वी विल गेट आवर रुक ऑन द B7 फाइल। पॉन आइसोलेटेड हमने कर ही दिया और दिस इज अमेजिंग, राइट। यस, कोई बात नहीं, बट वी आर थिंकिंग, वी आर फाइंडिंग द आइडियाज हाउ टू गेट प्ले विद द माइनॉरिटी अटैक। और अटैक अगर सीखना हो तो मिखाइल ताल के गेम से बेटर कुछ नहीं है। ओके, डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर ब्लैक टू कैप्चर दिस, राइट। अभी A3 B4 जाना, इट्स अ वेरी स्लो, राइट। आप डायरेक्टली B4 जा सकते हैं बिकॉज द रुक इज कमिंग ऑन B1। ओके, come, quick, let's go. So he played his bishop to D6, coming to exchange this bishop. Now tell me what will you play here? What is your next move to play? Quick guys, अभी हमारा टाइम हो गया। Oh my God, I am late. Okay, तो मैं जल्दी से इस गेम को फिनिश करता हूँ, right? Guys, if you understand this, don't forget to like this stream, double tap कर दो स्क्रीन पे if you understand how to do minor attacks, minority attack. B5, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? B5 is like giving him a connected pawns, right? तो B5 हम जाएंगे with the support. So rook B1. Now B5 we will go, okay, and get our rooks on the open file. B5 जाने में कोई problem नहीं था. Rook A B1. He exchanged the bishop. It's good for white only. B into D6, queen into F6. But B into D6, then queen will capture and this will get protected. और कहाँ से queen into F6 कहाँ आ रहा है भाई? Queen into D6 only, हाँ, and then knight C5. Knight C5 है, लेकिन अभी जब तक B6 को हम क्लियर नहीं कर देते तो उससे पहले knight C5 हम इजीली कभी भी मूव कर सकते हैं, राइट। डोंट वरी, लेट्स सी हाउ दे कंटिन्यू द गेम। सो H into G3 and then he played A6 to stop this B5. Okay, but obviously this is creating some weakness on the dark square. Playing A6 is also creating weakness on the dark square, right? Now he played knight C5, okay, attacking the B7 pawn, obviously, because he created this weakness by stopping this pawn. Okay, now rook E7, giving support to the B7, and now again we want to play B5. B5 चलना है तो क्या करना पड़ेगा?
हाँ, इसीलिए अब नाइट C5 विल वर्क। बिफोर A7 टू A6 नाइट C5 इज नॉट दैट गुड, राइट? अब A6 करने के बाद हम ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर दिस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें B5 करना है, तो इसके लिए A4 चलना पड़ेगा, विच Mikhail Tal also did. See, we can understand how they are playing the game. Okay, planning to play B5 only. Okay, so rook E7, rook to C7, getting this file की जब भी open होगा तो we will directly attack this queen, and it's a very good file, right? After B5. So what do you think, guys? What white will play in this position? ब्लैक का प्लान है कि अगर आप यहां जाते हो, he will capture this, he will get this open file and push this pawn and get the knight. अब आप यहां क्या कर सकते हो? Tell me, what will you do in this position? Quick. A4, you guys found it amazing, perfect. Yes, tell me, quick, quick, quick. I am already late because I have my class little, like मैंने थोड़ा delay किया है. H2 क्या कुछ भी take H2 है? H7. It's not coming. Queen B2. Not bad. Knight C3 तो पहले जा ही नहीं रहा है. B3 में भी, yeah. A5. A5 हम नहीं करना चाहते, हमें B5 करना है to break his pawn structure. A5 कर दिया हमें. What is your plan? To come here to play knight A4 to B6. लेकिन ठीक है, हम बैठ जाएंगे. It's a very good outpost. लेकिन our plan is to create like weakness on the minority pawn structure, right? He just activated his one more piece. Rook F to C1. He will take that open file if the open file will come. See this rook bishop. Rook has only one support. Right? The queen. अगर आप बैटरी बना लोगे, you have a chances to take that advantage. Okay? Yeah, that idea is good. लेकिन हमें अपने आइडिया को नहीं भूलना है. We are playing minority attack to create weakness, to create isolated pawn on this side. Okay? So now he played queen E7. Okay, look, queen E7 is also very like the protecting this, coming looking at the C5 diagonal, C5 square. But let's see. Now Mikhail Tal played rook B3. See, बहुत जल्दी में नहीं जाना है कि हम बहुत जल्दी जाके B5 break कर दे, then we will get the advantage. Slowly, slowly we need to improve this. Okay. Hi, Meet. So rook B3. Can you tell me rook का plan क्या है? Why he played his rook to B3? What he is planning? Can you tell? Wow, Aditya, you already found it. But what he is planning? Why he played rook B3? What is his plan? शाम के ही क्लास में बताना अमित. Yes, perfect that way. Amazing. So the plan is to get the rook to C3. Now he played G6 and now rook C3. Now if you see Tal has lot of pressure on the C file. यहाँ पे बहुत C file पे amazingly pressure create किया जा रहा है by Tal. Okay. Yes, Alekai's gun, sniper. Okay. Great, amazing. So now he played his rook A to C8. He also want to control on the C file. Okay. Now, guys, what do you think? What will you play here? Now the amazing move. This is not a very good move, right? This is a mistake from a black side. Okay. तो अब यहाँ पे बताओ कैसे इस मिस्टेक का एडवांटेज ताल विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस मिस्टेक. हाँ तो C4 G2 आप मत करो. यू कैन जस्ट प्ले गेम. ओके, वेरी गुड प्रज्ञा. बिशप इनटू A6 इज आल्सो नॉट बैड. इट्स अ गुड मूव. ओके, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यू विल गेट 3 pawns for a bishop and also 2 passed pawns. So bishop capturing A6 is a good move. Okay, bishop F5. लेकिन ये bishop F5
Capture, queen capture. What is your idea? Bishop f5 is not that good. Okay. Knight into b7. Amazing. Yes, Aditya, bishop into a6 is also good. Here, red tail star Prabhas. Yes, amazing. Tal played knight into b7. The amazing move. Okay. Bishop into a6 is also good. But let's see what will happen in this. What will happen if the rook will capture this one? What is his idea? Rook capture this. Yes, very good, Dark Web. I got your answer. It's not showing in chat, but I got you. Yes, the idea is to then bishop. Yes, Phantom. Then bishop into a6. Perfect. क्योंकि वो diagonal पे pieces आ गए थे. What if knight a6 then pawn a6? Simple था ना. हमने bishop से capture करना है. One rook has to move or we will get a passed pawn. Yes, now bishop into a6 ball. Yes. And now rook a8 is like saving one of his rook. He can save only one of his rook. Rook a8. Bishop into b7, queen into b7. अब बताओ क्या खेलोगे यहां पर? White to play. He gave up his two pieces, two minor piece for two pawn and one rook, which is not bad. Okay. And also created this weakness. Now the c6 pawn is weak pawn. I thought Phantom Stal would mark the move, yeah, but he did not. Okay, अब क्या खेलना है? Rook c6, capturing, very good. Rook into c6, okay. लेकिन क्या हम अपने pieces को भूल जाएं? Is it good to forget about your piece? हमेशा remember whenever you are finding your move, look for your opponent's plan first and then play. Yes, very good, Phantom. Now you found it. Queen b3. पहले give a support to your pawn, right? Give support to your pawn. Then he played rook a6. He is also giving support to his pawn. Now what will you do? And now let's see. He created a weakness of this, like he created that minority attack. Now how he will continue here? Because this two rooks minority attack is amazing on c6, right? अब बीच में क्वीन आ रहा था तो हम नहीं कर पा रहे थे. क्वीन से हम पहले नहीं कैप्चर कर सकते ना जब रुक सपोर्ट करेगा तो. That's why he just played the queen. Very good, red tail star. Amazing. Pawn push, very good. Pawn b5, very good. b5. Oh my god, you guys already found it, right? Why b5? Why you guys want to play b5? मतलब क्यों चलना है b5 भाई? Why? Why b5? Tell me why b5? Why you guys played b5? I really don't have any idea why you played b5. मतलब वीक पॉन से अपने पॉन को क्यों एक्स्ट्रा किया है? मुस्कुराना यही पहचान रखो, मेहनत की हर बूंद एक दिन रंग लाएगी, बस चलते रहो, अपनी उड़ान पर विश्वास रखो. अरे वाह, अमेजिंग काउंटर बात. To come to c8 with the rook, come to c8 with the rook. Oh, very good. Rook, because rook c7, amazing. Rook c7, yes. First, creating a passed pawn, and second, we will get the open file for our both the rooks, and we can use those rooks on the 7th rank as well. Very good. Perfect. So c into b5. Okay. Then rook c7, perfect move. You guys already found the idea. Abhi a into b5 is not that amazing, right? It's a inaccuracy because here Tal is winning tempo to get his rook on the 7th rank with the tempo, and then he will capture it, right? Queen b6 he played, and then a into b5 attacking this. Now let's see, black played rook to a5. अब बताओ क्या खेलोगे आप? What will you play in this position? पीछे से लिखा है pass pawn. Yeah, he got it. They are playing like 1800. अगर आप इस
आइडिया को यूज करोगे ना, आपने 1800 प्लेयर को कभी ये आइडिया यूज करते हुए देखा है इन देयर गेम्स? Rook c5. Rook c5 is a good move. Amazing. Not a bad idea to save the pawn. But Tal is Tal. He will not go. Oh, Govind Anil Kumar. Perfect. You found it. That's amazing idea. It's not about that pawn now. Because now Rook is on the 7th rank. See, that's why I'm saying Newt Phantom. Okay? Now, very good. Arey, yaar, you guys are amazing. Very good, Pragya. Very good, J4 in. Uh, Forget it, Ritesa. Focus on your ideas on the board. It happens. अभी तो बहुत ऐसे होगा. So Rook, he is also finding a move, so that's fine. So Rook 1 c6, right? Rook 1 c6. Perfect. Great. And now the idea is if we will exchange here. Now if you see, we have a एक एडवांटेज को दूसरे एडवांटेज में कन्वर्ट करना इज द बेस्ट वे टू विन योर विनिंग पोजीशन. ओके, एक ही एडवांटेज पे स्टक नहीं रहना है. एक एडवांटेज की वजह से क्रिएट अ सेकेंड वीकनेस. ओके, नथिंग नथिंग. Phantom. Okay, so obviously queen capture b5, queen capture b5, rook into b5. And why you played c6? Tell me guys, why you played c6? Hi Rocker. Hello. Yes. So उसी का तो एडवांटेज लेना है. What we will do now? Quick. अरे हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं. Yes. Knight into f, rook into f6, attacking this bishop, and already uh, Tal found the idea how to win the piece, and his opponent did not calculated the next move. So he came here, all the pieces on the 8th rank. Tell me last perfect move from Tal to win the game. उसके बाद कुछ नहीं हो सकता ब्लैक की तरफ से. Last perfect move. What will you play? The last perfect move. Tell me from Tal's side. Quick. आज तो काफी लंबी क्लास चली गई यार. मतलब मेरी क्लास आज थी नहीं 11:30 पे, तो मैंने चल कर दिया. f4. ओके, रुक d6. ओके, अभी तक मुझे सही मूव नहीं दिखा. व्हाई वी आर प्लेइंग दैट मूव f4 रुक d6? नो, you don't need to play these kind of moves, right? Obviously. रुक c3. नो, रुक c3 क्या करेगा भाई? c3 क्यों? why? f7. What? No. Bishop will capture. Rook take nice. No. Sarma, bad. No been seen. C8. Yes. Boglapan, very good. You found it. Aditya, no. Yes. Prabhas, very good. No been seen. Yes. C8. Easy ना. यहाँ पे ये दोनों pieces hanging piece हैं already. Just go and attack them. Right? No. E7 नहीं जाना है. सीधा सीधा attack करो from the same file. So Rook will also not come to protect it. And now the game is over. King G7. अगर आप देखो तो यहाँ पर, now tell me the one last move. One last move. Tell me. ये उसके बाद देखो क्या चलते हो आप. Your rook is under attack. If you capture this, you will lose this, and capturing this is like a equal. बोर्ड क्लियर नहीं है. इतना क्लियर तो मेरे को दिख रहा है यार. रुक e8. नहीं, रुक e8 मत जाओ. सीधा सीधा he played rook f3 back. Okay, he played rook f3 back because there is no way to save his one piece. अगर वो बिशप बचाएगा तो knight will be knight is gone. अगर वो knight बचाएगा तो bishop is gone. Okay, so there is no way to save this. Maybe one check, knight comes here, or after capturing this rook into e8, you got the piece. Or next move, knight is he's planning to come here, and he played knight f6, and there is no way to save the knight. Knight is also gone. Okay, and Tal opponent resigned the game in this position. Okay. Subscribe लिखा आ रहा होगा, click करके हटा दो guys. Yes, very good. And if you understand how to play, how to use minority attack, don't forget to double tap on your screen to like the stream. Okay, to like this class. Okay, एक बार मैं फिर से review summary दे देता हूँ. First, we already know the what is minority pawn structure. तो Queen's Gambit opening हुई. Okay, in this Queen's Gambit, it started with English, transposed into a Queen's Gambit, and this is a, this both pawns gone here.
Okay, there is no pawn on the E file for a black and on a C file for a white. अब यहां पर आपको सिंपल दिख सकता है, it's a clear main line to get rook f8, right? And here, now see this pawn here, white has two pawns only, black has four pawn, right, on the queen side. तो ये हो गया माइनॉरिटी पॉन. अटैक कैसे करना है? वी नीड टू क्रिएट आइसोलेटेड पॉन और अ वीक पॉन on the opponent queen side. Rocker, evening, or maybe only Saturday, Sunday I will come to play up now. So now he started moving his pieces forward. Okay, the idea is simply to create, देखो कैसे, b4 to b5, create weakness, giving support to the b4 to go forward. He comes here, created a dark square weakness, so knight c5 attacking this. He comes to protect it here. Then a4, simple idea, हमें पॉन पुश करके वीकनेस क्रिएट करनी है, हमें आइसोलेटेड पॉन या बैकवर्ड पॉन क्रिएट करना है, ठीक है. एंड देन obviously he is posting all pieces on the queen side, and once your opponent, this Alekhine gun, your opponent did mistake, blunder, so अब आप प्रेशर क्रिएट करोगे, opponent will do blunders and you will get an advantage to win by playing on the queen side. Okay, so if you guys understand this minority attack, minority pawn attack, write down yes in chat and don't forget to like the stream. Okay, so we learn also majority attack, how you will play if you have a pawn majority. Now we also learn minority attack. Okay, so you guys can try to play 3 games. आज आप 3 गेम खेलो, try to use this in your game. Okay, और फिर उसको एनालिसिस करो कहां पर आपने मिस करा चांसेस एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग विद दैट. ओके, दैट विल रियली रियली हेल्प यू टू इंप्रूव इन योर गेम एंड इंप्रूव योर रेटिंग एज वेल. मेजॉरिटी पॉन कैसे खेलते हैं फैंटम, हमने पहले ऑलरेडी वी लर्न, राइट? तो वो आपको उसमें से पता चल जाएगा, सो डोंट वरी. Yes. Okay, guys, that's all. That's all from my side. I'm already late for my classes. Okay, so I have to go. See you in the next class. Don't forget, Monday to Friday, 11 a.m. free chess classes where I'm sharing all the Grandmaster curriculum with you guys to improve in your game. And very soon, tonight, I don't think I will come because Monday to Friday, थोड़ा US के time change हो चुके हैं प्रभास. तो मेरी classes is going for a very very late night, like 3:30 a.m. तो मैं नहीं आ पाऊंगा. But Saturday, Sunday, I will come to play and review the games, and Monday to Friday for a classes. Okay. So see you guys. Take care. Bye bye. Keep practicing and keep improving in your game. Take care. और समझ में आया तो डबल टैप करके लाइक करो और yes also write down yes in chat कि मुझे भी समझ में आया कि कितने लोगों को समझ में आया, मैंने सही से बताया या नहीं. ओके, तो मतलब मैंने तो सही से बताया ही होगा. अमेजिंग. गुड लक फैंटम. बाय बाय. टेक केयर.